everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Brilliant Faces with Dr. Saadia Asghar Khan. Today I have a very exciting guest for everyone. That is Uzma Beg, a very well-known, very famous television actress of Pakistan. Assalamu alaikum, Uzma. Assalamualaikum, how are you? I'm fine, thank you. आप कैसी हो? Alhamdulillah, I'm great. I'm in Karachi. I'm shooting for Dil Pe Dastak right now. You know the Ramzan serial that's coming up. So tell us a bit Yeah, about it. yeah. So Dil Pe Dastak is a light comedy Mhm. with with it's got a little bit of serious stuff going on in it, but it's generally overall a light comedy, and I love comedy. It's such a joy to shoot a comedy as opposed to. I mean, I enjoy both. Of course, I wouldn't be want to be stuck doing just one thing, but I enjoy comedy more than serious stuff. Acha, you're also very well known for your comedic roles, right? Everybody knows you for, the kind of acting you do in these dramas. And अभी जो आप शूट कर रही हो, उसके बारे में कुछ बताओ. दिल पे दस्तक. It's Hmm. coming on the 1st of Ramzan, inshallah. Uska ठीक. hero, heroine, this new girl, Anna, she was actually Anna Khan. She was in Fairy Tale. Hmm. There was a पिछला रमजान serial था Fairy Tale, फिर Fairy Tale 2 आया, so she was a part of that. Okay. And she's playing the lead. And यूं ही जो मैंने इससे पहले ड्रामा किया था, Hmm. यूं ही में जो मेरे भाई का बेटा बना हुआ था खाकान, he Hmm. is playing the lead. और जो मेरे भाई बने हुए थे यूं ही में वो अब मेरे ससुर बने हुए हैं. What's your role? I'm playing this, very simple woman from Gujranwala. जो दिल में आता है वो बोलती जाती है. She's not really doesn't have much of a filter on. Like उसको जो भी सही लगता है वो बोल देती है अपनी तरफ से. काफी मुंहफट टाइप बंदी है. Her name is Rubina. Okay, so that's something that everyone has to look forward to now. You guys all have to watch it. Dil Pe Yeah. Dastak. Mhm. It'll be playing at 7 p.m. It airs on the 1st of Ramzan. उसमें कौन से चैनल पे? Hum TV. हम टीवी. ठीक है. It's got a lovely cast. Hmm. इसमें Sakina Samoji हैं, Hmm. and she's mashallah, I absolutely adore her. She's brilliant. Arjuman Rahim hai, really good friend of mine. Absolutely love her. Then Salim Sheikh, another old friend. There's Saman Ansari. There's Farhan Ali Agha, another really old friend. तो मुझे तो लगता है ये मेरे कोई दोस्तों की कास्ट है सारी. That's But it excellent. doesn't feel like we're going to work. There's this young upcoming actor who played a smaller role in Kala Doria. He's playing the second lead, mashallah, in this one. His name is Taimur, and he's beautiful. And the pièce de résistance is this girl who's playing my adopted daughter, and she is Parishi Adnan. She's a designer. She has this line called House of Pariche, mashallah. And her mom's a designer, her dad's a designer. She's Amir Adnan's daughter. And so, and she's such a joy. She's such a joy. I absolutely adore her. We've had some great moments on set, on screen. And I'm just loving working with these wonderful people. They're just a bunch of beautiful people that are bringing so much joy to the set. I swear. With these people, I don't feel like I'm going to work. I feel like I'm at home. So since it's very clear that you really enjoy what you're doing, how did you get into acting and उसके बारे में कुछ हमें आप बताओ कि कब शुरू किया और किस तरह इंटरेस्ट हुआ? People who become actors kind of know very early on that is what they're going to do for the rest of their life. Hmm. I knew when I was in school that Hmm. this is what I want to do. I feel like you've got to be very passionate about what you do, and you got to do it right. You can't just see if you force yourself to do something that is viable or economically more viable or for some other reason, you'll just scratch your way to the middle. But if you do what you're passionate about, you'll always rise above. You'll always go somewhere. And I think as a child, I always knew I wanted to be an actor. It's just because I had all these restrictions. I'm from Lahore, so no one was supporting me. No one, I couldn't even, it was something that I was too terrified to even bring up. कि जी I want to be an actor. मुझे तो चपेट पर पढ़नी थी और शायद पढ़ भी गई होगी कि ये क्या बकवास कर रही हो. So मुझे कभी
मौका वौका नहीं मिला, ना मुझे किसी ने सपोर्ट किया, वो ये तो सब मैंने बाद में किया। लाइक आई वेंट टू लंदन, आई डिड माय मास्टर्स इन फिल्म डायरेक्शन, एंड वहां से लाइक आई जस्ट डिसाइडेड कि देयर कम्स अ टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू टेक your life in your own hands and you say, okay, enough. I think I'll take it from here. Mhm. And that's what I did. I left and I went and studied in London. वहाँ से मैंने masters किया film direction में, and I pursued this path. And then I met my husband in London. We got married, and it was love at first sight kind of thing. उसके बाद we moved to Australia. Australia में मैंने मेलबर्न यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर्स मास्टर क्लास की. So I mean मैंने सब काम इसी फील्ड में किया है. And I acting school also, all that stuff I did in Australia. I did the Stanislavski method of acting, and I've done I've done these one-on-one, and Anupam Kher ka jo an actor prepares hai, I've done these Mhm. one-on-one workshops with Anupam Kher, and then other stuff in acting, like Mm. workshops and stuff like that. Lovely. So all my training is in this field, and this is my field. I've actually never ever, I don't think I've ever worked anywhere else. शुरू-शुरू में मुझे याद है जब शुरू-शुरू में मैंने एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, पता नहीं क्यों. 1-2 महीने में फारिग भी हो गई थी. I was like कब done. कब किया था? बहुत बहुत पुरानी बात है. आई थिंक बैचलर्स के बाद कर लिया था कुछ अरसे के लिए, जस्ट टू सी हाउ, बट इट्स नॉट मी. हम्म. आई कैन नॉट डू अ डेस्क जॉब, माय गॉड. इट्स जस्ट नॉट मी. Well, you don't need to. So, तो फिल्म मेकिंग भी तो पढ़ी, तो फिर did you ever direct anything or? Direction की तरफ भी किया. I worked as a program director at ARY Digital, अच्छा. and in London and in हम्म. Dubai. And I used to I was program director, and I used to host the morning show on ऑन ARY. वो दैट वाज माय बेबी. मैं उसको डायरेक्ट भी करती थी, प्रोड्यूस भी करती थी, और मैं आई यूज्ड टू host it as well. Then I had another baby. It was a show called Kitch Kitch, which I didn't host myself, but I directed and produced it. And then, like I made a documentary on Nazia Hassan's life for her birthday. I directed, and I directed the entire documentary. I even edited it myself. So I've done. There used to be a show called Reach Out, which I used to edit, which I was the editor for at ARY. So मैं ARY पे काम करती थी, तो सारे काम करती थी. Because once you do your masters in film direction, you can do everything. Right, right. So yeah, so I've done a lot of this work as well. But acting was my real calling. Always, always. All this, I thought, okay, this is my plan B. Like I'll give you an example. You Mm. must have heard of this amazing director called Haitham Hussain. So Mm. he made Dastan, that amazing serial Dastan, and he's a legend. We did our masters from the same film school in London. Mm. I did it 2 years before him. He was 2 years junior. And look at where he is as a director. But I'm predominantly an actor, Mm. and Mm. so my calling is acting. Mm. It's I guess it's maybe at some point in time in my life I'll direct. I have so much respect for people like Itcham, जो यूं ही के director हैं. Mm. Not only is he a fabulous director, he's a fabulous actor. And then a really good friend of mine, Saifi, he's a fabulous director. Like इस तरह से बहुत सारे. Right. I know a lot of people who are doing a lot of other things, and excelling in every direction, mashallah. So I have a lot of respect for that. But for me, right now, I think I'm going to stick to acting. Given कि लोगों को certain type of roles में आप अच्छी लगती हो, but what kind of a role would you like to do, and what do you prefer? हाँ, ये तो मैं हर इंटरव्यू में कह कह के मर गई हूँ कि मुझे कोई स्पाई कास्ट कर ले. मुझे कोई स्पाई कास्ट कर ले. यहाँ पे होता है कि आप जैसे जैसे एज करते जाते हैं, आपको लाइक आपके अंदर लोगों को एक माँ नजर आना शुरू हो जाती है. हम्म. और वो जो माँ है ना, वो आपकी जान नहीं छोड़ती. तो घर में भी आप माँ हैं, और घर के बाहर भी आप, दफ्तर में भी आप माँ हैं. तो इट्स लिटिल, I'm a little over it. I think I've had enough.
नहीं, बट इट्स ओके। या बट दिस इज आवर, हमारा सीन ही ये है यहाँ पे Hmm. ज्यादातर। एक सर्टेन एज के बाद आपको या माओ की रोल मिलते हैं या नानियों दादियों के मिलते हैं। और मतलब मैं तो ज्यादातर माई प्ले करती हूँ, बट यस यू नो व्हाट, आई इवन प्लेड कॉमेडी में तो सब चलता है, राइट? सो Hmm. उसका तो मार्जिन बड़ा होता है टू डू ऑल काइंड ऑफ स्टफ। सो मुझे आई डन टू कॉमेडी ड्रामाज, एक चुपके चुपके, एक हम तुम चुपके चुपके में प्लेड दादी, एंड हम तुम मैं प्लेड नानी. So that was a lot, and you know what? It was so much fun. They were Hmm. both a riot. I enjoyed shooting. I actually enjoy shooting for comedies. I really enjoy it. I have fun. You're very good at it. Chupke Chupke is the one जिसके role में you were like really appreciated. Yeah, yes, है and ना? God bless people for, it's very kind of people to appreciate that. But it was a very challenging role. It was, I had to speak Saraiki, and, I didn't speak a word of Saraiki before. The Saraiki role was very challenging because Hmm. वो थोड़ा होता है ना कि जरा सा मैं लेफ्ट जाती थी तो वो पठान में चला जाता था Hmm. एक्सेंट, राइट जाती थी तो वो सिंधी में चला जाता था, तो आई हैड टू स्टिक टू सराइकी. इट वाज वेरी Hmm. वेरी चैलेंजिंग. Did you have a coach, Uzma? No, I didn't. I didn't have a coach. मैंने खुद ही हाथ पैर मार के YouTube से, और चुपके चुपके का शूट तो उसमें 2020 में शुरू हुआ था ना, जब कोविड भी शुरू हुआ. तो वो Hmm. तो हमने भी शॉर्ट चुपके चुपके वो 2 वीक्स फिर लॉकडाउन हो गया था. तो Hmm. उस दौरान शुरू शुरू में ना, आई स्टेड एट माय चाचा's हाउस, एंड वहां पे जो शेफ वाज हैपेंड टू बी अ सराइकी स्पीकिंग लेडी. आई Aha, स्टिल good for आई स्टिल you. रिमेम्बर हर नेम वाज हमीदा. Hmm. एंड गॉड ब्लेस हर, वो उसने मुझे इतना हेल्प किया. मैं उसके साथ बैठ जाती थी और मैं उसके साथ गप्पे लगाती थी और मैं उसके एक्सेंट को पकड़ने की कोशिश करती, और उसने सराइकी सीख ली थी. फिर उसके बाद एज लक वुड हैव इट, वन ऑफ द एक्टर्स, हर असिस्टेंट वाज अ सराइकी स्पीकिंग गर्ल. फिर सेट पे मैं उसके साथ गप्पे लगाती थी. तो आई वाज Hmm. हैंगिंग अराउंड अ लॉट विद असिस्टेंट्स एंड शेफ्स एंड ऑल ड्यूरिंग द शूट ऑफ चुपके चुपके. सो Hmm. दिल पे दस्तक का ये जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, Hmm. दिस लेडी फ्रॉम गुजरावाला, Hmm. इट्स अ पंजाबी कैरेक्टर. And I'm not Punjabi, so this is also challenging, but it's a much easier accent to do because I grew up in Lahore, na. तो Right. वो मेरे लिए, हाँ, it's much easier than Saraiki was. हम तुम में बिल्कुल डिफरेंट था. वो बिल्कुल उर्दू स्पीकिंग एक्सेंट था. I think you always had a talent for languages, didn't you? Like you were very good in French Languages, in yes. college, right? Yes, Alhamdulillah. So yes, yeah, I do. I speak multiple languages, and I'm happy about that. Excellent. I think. Okay, so basically, if I weren't an actor, Hmm. I would have been an interior designer, and Okay. if I weren't an interior designer, I would Hmm. have liked to have been an interpreter. So these are Hmm. the three things that I love. I love Hmm. languages. And you would still like Yeah. to play a spy if they find you a role, right? Absolutely, and I would like to place a spy in Russian. Yeah, Yeah, and beat up I people. want I want to come directly from Siberia. Yes. Good one. अच्छा मुझे बताओ कि Yeah. you were saying that your family would have probably not approved you going into acting. So you No, never no. asked them? Because you come to a point where you stop caring. You get beyond, you get past that. So Hmm. no, I know. But once I started, then they were very nice about it. You know. अच्छा, Well, I didn't give them much of a choice later on. शुरू में right. नहीं किया बस. Hmm. And obviously your family right now is supportive. Your husband is very supportive and right? Oh yeah. Oh Hmm. my God. God bless him. मैं तो सारा वक्त, I can't thank him enough. The reason I'm where I am today is because of him, because of his support. हम जब ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, मैंने उस वक्त वहां से भी आके कराची में शूट्स किए. Hmm. एंड उस वक्त तो हमारी बच्ची छोटी सी थी. डॉटर वाज जस्ट बेचारी 3 साल की. वो उस बच्ची को भी संभाल रहा था. एंड आई मीन, he's my strength. He's the reason I am where I am today. Oh, lovely. MashaAllah. Let's go back to when you were in Lahore. You did your bachelor's, and then what happened after that? I did my bachelor's, I did my master's. I have a double master's.
अच्छा. Yeah, my first master's was an MBA in finance. My bachelor's was I did economics and statistics. My second master's was in film direction and production. The first master's I feel was a complete waste of time and energy. I don't even know why I put myself through that. It just was not me. आई स्वेयर अगर मैं अपनी ही माँ होती या मैं अपना ही बाप होती तो आई वुड हैव सीन कि ये मेरे बच्चे का जो है ना एप्टीट्यूड कहीं और है Hmm. लेट्स सेंड टू फिल्म स्कूल फ्रॉम द बिगिन मैं तो ये करती मैं शुरू शुरू में जब मेरी माय डॉटर वाज ग्रोइंग अप वो बड़ी पटाखा थी बड़ी पटाखा उसके तो मतलब उसकी हरकतें ही नहीं खत्म हो रही होती थी Hmm. जब वो 2-3 साल की थी तो वो इतना ड्रामा करती थी माय गॉड आई वाज 100% श्योर कि ये तो एक्टर बनेगी तो आई टोल्ड माय हस्बैंड कि भाई ये तो मेरे पे चली गई है उसके तो तमाशे ही नहीं खत्म होते थे मैंने कहा भाई अगर तूने ड्रामा ही करना है तो देन यू गोना मेक मनी डूइंग इट दिस इज व्हाट यू गोना डू सो फिर 4 साल की उम्र में उसको उसको एक्टिंग स्कूल में डाल दिया शी वेंट टू एक्टिंग स्कूल शी एक्स्ट्रा करिकुलर was doing rhythmic gymnastics she was doing singing and dancing फिर उसके बाद we moved to दुबई दुबई आके उसने स्कूल के ड्रामास में ऑडिशन वगैरह किया शी लैंडेड द लीड शी लैंडेड द नेगेटिव लीड उसको हमेशा अमेजिंग किस्म के रोल्स मिल रहे थे Wow. मिलते थे बट पता नहीं क्या हुआ फिर 12 साल की उम्र में आई रिमेम्बर वो शी बेटा ये क्या पढ़ रहे हो आप तो शी सेड मामा ये मैंने लाइब्रेरी से किताब ली है आई थिंक आई एम एन इंट्रोवर्ट उसके बाद उसने कहा मैंने कोई ड्रामे में एक्टिंग नहीं करनी कोई ऑडिशन नहीं करना आई एम अ वेरी शाय पर्सन आई एम एन इंट्रोवर्ट मैं यही हूँ हाय मैं कहा ये क्या हो गया फिर मैंने अपने मियाँ को कहा लो जी एक्टिंग तो नहीं होने लगी यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब मैं आई वाज सो श्योर ऑफ इट पर देखो कैसे बच्चे बदल जाते हैं and she completely went into her shell and बिल्कुल shy nerd पढ़ाई 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 and that's it so she actually my daughter has categorically informed me that she wants to be a doctor Very nice. That's yeah great. daughter मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह I'm so proud of her she is an interior designer Aha. Mashallah. so so mashallah alhamdulillah and she's doing so well oh my god I'm just so proud of her मुझे अपने डिजाइन वगैरह दिखाती है मैं कहती हूँ वाओ तो वो मैं बता रही हूँ ना उसमें कुछ मेरे जीन्स आए हैं Hmm. जो छोटी वाली है उसमें आके तो निकल गए जीन हस्बैंड के जीन ज्यादा टिक गए उसके अंदर ही इज अ नर्ड ही इज एन इंटेलेक्चुअल ही इज एन इंट्रोवर्ट And you're totally different. You're an extrovert. तो एक्टिंग में जो पहला कोई ड्रामा किया वो कौन सा था? एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट सबसे पहले वो मुनीजा हाशमी के किसी ड्रामे में काम किया था फिर उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो इजाजत कोई नहीं थी फिर I have this friend. So Rashida and I used to do this show called Gas Tower on PTD World. उसका स्क्रिप्ट भी हम दोनों खुद लिखते थे उसमें एक्टिंग भी हम करते थे Hmm. वो नईम बुखारी का एक शो होता था गेस्ट आवर तो उसकी पैरोडी हम करते थे कॉल्ड गैस टावर Rashid used to play Naeem Bukhari, Hmm. and I used to play, wigs बदल बदल के different हीरोइनों की मैं नकलें उतार के तो वो मेरे इंटरव्यूज करता था. It was all comedy, it was good fun, light comedy. पर ये होता था ना वो इजाजतें वो छुप छुपा के किया पकड़े गए तो फिर बंद कर दिया तो वो ये I've always found this to be true and correct me if I'm wrong. लाहौर हैज ऑलवेज बीन मोर कंजर्वेटिव देन कराची वहां लाहौर में हम लोग मगरिब के बाद बाहर जाने की इजाजतें लेने के चक्करों में फंसे होते थे तो यहाँ पे कराची में लोग पार्टी कर रहे होते थे and I feel like हम किधर पैदा हो गए Well, things have improved. I mean, that was many years ago, so things are much yeah. better now for the younger Oh, generation, yeah. right? Oh, yeah. अच्छा, तो Yeah, yeah. फर्स्ट ड्रामा फिर कौन सा था? ये वाला कौन से ईयर में था? ईयर्स याद है कुछ? सबसे पहला एक्चुअल ड्रामा जो किया था ना वो लंदन में किया था 2002 में हम्म. अधूरे के नाम से और उसमें था फैसल रहमान हम्म. and there was an Indian actor called Ashwin Mushran. उसके बाद मैंने एक किया called चलती का नाम लव स्टोरी उसमें भी वो भी कॉमेडी था उसमें मैं हेमा मालिनी बनी हुई थी फिर देन राशिद फ्लू मी डाउन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया 2012 में फिर मैंने उसके लिए एक ड्रामा किया था कॉमेडी ड्रामा था उसमें 5 कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए थे ट्विन सिस्टर्स और फिर उनकी माँ नौकरानी
और वीना मलिक। Now that I have to see. क्या नाम था उसका? उसका मुझे पता नहीं चला कि वो क्या हुआ। आई डोंट नो वेयर इट इज। Oh. वो कहाँ चला कहाँ नहीं चला मुझे नहीं पता। पता नहीं उसका क्या बना, बट इट वाज अ रियली फन शूट, and I love doing it. I didn't exactly play Veena Malik, but I Hmm. took my inspiration from her for that character. Actress का किया था, Hmm. from her and from Meera ji. So मीरा जी एंड वीना मलिक को मैंने मिला के एक एक्ट्रेस का रोल किया था। hello Jack type. I wish it was available so that we I could know. go and watch it. Yeah, I have clips of it in my show reel, but I Hmm. don't think it's on YouTube. I don't think it's on YouTube. क्योंकि That's it. मैं तो आके शूट करके ऑस्ट्रेलिया वापस चली जाती थी, तो मुझे Hmm. क्या उस वक्त कुछ नहीं पता था कि क्या उस वक्त यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया फिर कब गई? You graduated from the film school. And which film school was this, Yeah. Uzma? कौन सा था? It was the Middlesex University, London में। वहाँ Middlesex. पे the film school there. It was called the School of Art and Design and Performing Arts. So वहाँ से मैंने मास्टर्स किया था फिल्म डायरेक्शन में। They used to give everyone a camera and a tripod. तो मैं पता नहीं इतना भारी ट्राइपॉड और कैमरा उठा के घूम रही होती थी पूरे पूरे लंदन में। What fun. अच्छा, और फिर ऑस्ट्रेलिया कब गई? After you graduated, you got married, and then हाँ, then I got married in 2003, hmm. and my husband got a great job offer in Australia from the same company that he was working for in London. But actually, I didn't move straight away. मैं पहले दुबई आए, मेरा ARY के साथ contract था. They moved headquarters from London to Dubai, so I moved to Dubai with them. वहीं पे मैंने ये morning show किया, Good Morning Asia के नाम से मैं उसको करती थी. Hmm. And जो दूसरा शो था, it was खिचखिच, it was like a talk show. It was a good fun show. अच्छा. उसमें गेस्ट आते थे, होस्ट था, Hmm. टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन होते थे. That was also my baby from like from conception to finish. Like I thought of it, and I used to direct it, and I was very passionate about it. You just in life you just have to be very happily passionate about whatever you want to do. Otherwise, it's not fun. Yeah, absolutely. And you're very lucky, mashallah, that you have this opportunity. I know. I would never want to work at McDonald's. No. Why? Because I remember as a student, जब आप लंदन वगैरह में overseas when you're a student, कोई McDonald's में काम कर रहा होता था, because I lived at the halls of residence, right? So Hmm. कोई कहीं काम कर रहा होता, मैंने ऐसे कोई काम नहीं किए. मैं उस वक्त भी पार्ट टाइम ARY पे ही काम कर रही थी as a student. अच्छा. I was learning on the job, and while I was doing my masters in film direction. और फिर मास्टर्स करने के बाद मुझे प्रॉपर जॉब भी ARY पे ही मिल गई थी. ठीक, तो ARY पे कितनी देर काम किया? वेल एज अ स्टूडेंट किया, फिर उसके Hmm. बाद किया, मतलब उसी अरसे किया, फिर मैं देन आई गॉट मैरिड एंड लेफ्ट. आई लेफ्ट ऑस्ट्रेलिया इन 2015. I moved. Do you have any favorite You know, actor? do I have any favorite actors? Oh, Hmm. yes, I do. From where? Are you talking about Hollywood or Pakistan, or what are you Let's talk talking about? about Pakistan first. Okay, so there are categories, right? Hmm. Older actors and younger actors. Hmm. So older actors में there's Noman Ijaz, he's a brilliant actor. Islamuddin, brilliant actor. औरतों में से there's Bushra Ansari हैं, she's brilliant. Bilal Abbas, I think he's so good. I think Usman Khalid Butt is a brilliant actor. He's a great comedian. Chupke Chupke mein, we work together in Chupke Chupke, and we have a lot of really amazing talent here, Don't we? mashallah. That's so true. Aiza Khan is so good. Aiza is such a great actor. Hmm. So हमारे यहाँ तो बहुत talent भरा हुआ है, Hmm. mashallah. Hollywood में से one of my favorite actors is Bradley Cooper, and of course Tom Cruise. Oh my God. वो उस वक्त शायद जवानी, टॉम क्रूज की जवानी में शायद उसकी इतनी कदर नहीं की जितनी कि अब उसके बुढ़ापे में कर रहे हैं, Hmm. क्योंकि द काइंड ऑफ things he's doing in his budhapa are a huge inspiration to all of us. He's like 60 or something, no? Hmm. Hmm. टॉम क्रूज. और वो कभी कहीं से लटका हुआ है, तो कभी कहीं से छलांग लगा रहा है, तो कभी किसी मोटरसाइकिल पे चढ़ा हुआ है. आई मीन ओ माय गॉड. मतलब मैं कहती हूँ कि अगर अगर ऐसे होना है 60 साल का, ओके, तो ब्रिंग इट ऑन यार. आई मीन ओ माय गॉड.
I have Oh, so much respect for that man. I think now he is my favorite actor. I'm really interested in finding out because I know you have a great sense of humor and you're very witty. How about stand-up comedy? Have you ever considered being a stand-up comic or have you tried it? Because I think you could really make people laugh. Oh my God, when I went to London, Hmm. I used to hang out with people and hee ha ha when I went there as a student. Hmm. So, like I said, a lot of students do, part-time work. Hmm. मुझे stand-up comedy की offers आने शुरू हो गए लंदन Okay. में. Ah. I mean, this lady actually called me, said, हमारे यहाँ ना शादी हो रही है, तो आप बताएं कि आप वो स्टैंड अप कॉमेडी कर सकती हैं. नहीं नहीं, तो I was told to call you and we were wondering, will you do stand up comedy. अब पता नहीं उनका bizarre सा accent था. तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आर यू क्रेजी. मेरा पूरा खानदान मुझे शक्ल नहीं देखेगा मेरी, आप कैसी बातें कर रही. नॉट एट ऑल. आई डिडंट. You didn't do भाई it? वो मेरे अंदर से ना लाहौर ही नहीं निकलता. मेरे अंदर से लाहौर नहीं निकलता. मैं क्या करूं. ल- लंदन जाके भी मुझे इतना लाहौर का खौफ था और खानदान का खौफ और सबका खौफ कि मैंने कहा नहीं. But you're giving your daughters that room now, right? उनके पास इतनी freedom Oh है to yes. decide. Oh yes. You know what, Sadia? I personally feel that you have one life to live, right? It's not a dress rehearsal. This is it. अब इसी लाइफ में जो आप मरे जा रहे हैं करने के लिए, जो आपका पैशन है वो नहीं परसू कर सकते, तो आप कब करेंगे. Well, the good thing is, Uzma, that at least you got this chance, right? Growing up में जैसे मर्जी conservative society थी, but you're very Yeah. lucky you got this chance, you're doing something you love, and you have the kind of life. No, Sadia, uh, got this chance क्या होता है. You have to make your chances in You life. grabbed You it. have Yeah, you have to fight for yourself. You have to fight for your chances. You have to fight for your rights. You have to work bloody hard. that's very You true. don't get anything on a plate. Yeah. But there is a It higher doesn't work entity like that. who does give it Huh? out. There is a higher entity who does give it out. And so you got Oh it. yes. Yes? अल्लाह अल्लाह ताला के हाँ, बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो ये बस तो वो तो हाँ, वो तो सही है ना? सबसे पहले. हम्म, वो तो देखिए सबसे पहले अल्लाह. हम्म, आप अल्लाह चाहेगा तो आपको इतनी तौफीक भी होगी कि आप फाइट भी कर सकते हैं. बिल्कुल तो सही। सबसे पहले तो आपको अपने लिए दुआ करनी पड़ती है और आपको अपने अंदर बिलीव करना पड़ता है और आपको अल्लाह से दुआ करनी पड़ती है कि आप अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत भी अता फरमाए और आपके लिए आसानियां करे. सबसे पहले तो वो है, उसके बाद कुछ और है. बिल्कुल सही। एब्सोल्युटली. बिल्कुल। या अच्छा, जब इस या पूरे करियर में, राइट, अब कितने साल हो गए? लगातार पाकिस्तान में तो मैं पिछले 9 साल से काम कर रही हूँ. हम्म, आई हैव बीन एक्टिंग इन ऑस्ट्रेलिया, आई हैव एक्टेड इन लंदन हम्म, एंड ऑस्ट्रेलियन सीरीज एंड ऑल. बट हम्म, वहां पे ये था कि जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो इट्स लाइक वन आफ्टर द अदर, आप ढा 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 काम हम्म, करते रहे एंड इट्स हम्म, वेरी ग्रेटिफाइंग. हम्म, एंड यू गेट टू डू रोल्स ऑफ योर चॉइस. और ये वो वहां पे ये होता है क्योंकि आई एम नॉट ब्लॉन्ड, आई एम नॉट ब्लू आइड, मेरा ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट नहीं है, तो वो हम्म, आप एक सर्टेन उसमें आ जाते हैं हाँ, कैटेगरी में एक्सोटिक लोगों की. बिल्कुल। सो एक्सोटिक. तो हम्म, अब एक्सोटिक कोई रोल है कि नहीं है, तो अब हम्म, वो और एक्सोटिक रोल्स, बिकॉज यू सी ब्रिटेन में हम लोग ज्यादा जेनेरिक हैं, तो वो हम्म, लोग हमेशा अपने ड्रामों में अपनी सीरीज में एक टोकन ब्राउन पर्सन जरूर होता है, राइट. हम्म, उनका टोकन देसी जरूर होता है, तो इट्स बिल्कुल। मच इजियर. हम्म, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट देयर येट. ऑस्ट्रेलिया हम्म, में ऐसा नहीं होता. एटलीस्ट 9 साल पहले तो नहीं हो रहा था, तो वो मुझे हम्म। फ्रस्ट्रेशन होती थी, इसलिए आई मूव्ड टू अच्छा, दुबई. आई मूव कॉन्टिनेंट्स. because of या this, what have you found the most challenging in your entire career where acting is concerned? सबसे ज्यादा क्या मुश्किल चीज है? the waiting. Waiting for what? You waiting on set hours and Hmm, hours and hours and hours. We were shooting for Angan, hmm, and Angan is a period drama. तो हमने 2 हवेलियों में शूट किया था. So जो सेकंड हवेली थी, वो उसमें कोई रहता नहीं था.
तो nothing was functioning over there, nothing was functioning properly. तो वो बड़ा एक hard shoot था. It was very tough. वजीराबाद की सर्दी, we were freezing. और उस सर्दी में मतलब कभी रनिंग वाटर है तो नहीं है, कभी नहीं है तो कभी कुछ है तो कभी कुछ है, और वो बिल्कुल मुझे तो लग रहा था सारी हवेली की ईंटें गिर जाएंगी या क्या हो जाएगा. इट वाज सो अनकंफर्टेबल टू शूट ओवर देयर. और वहां पे ये होता था कि you know आंगन was directed by इचाम, और इचाम का जो स्टाइल है शूटिंग का वो बड़ा फिल्मी है. वो हर चीज को इतने प्यार से शूट करते हैं कि इट्स लाइक अ फिल्म. इट्स लाइक he's even when he shoots a drama, it's like he's shooting a movie. उसमें उनके जो सीन्स जो होते हैं ना, उसके अंदर फिर जो एक्टर जिसका सीन नहीं हो रहा था, फिर वो घंटों घंटों बैठ के वेट कर रहा होता है. एंड ये सिर्फ उनके ड्रामे में नहीं. तो उसमें ऑन द सेट ऑफ आंगन, एंड आई सेड, अरे बॉस आज तो वेटिंग की जो है ना इंतहा हो गई है घंटों. He said, my dear, acting is your passion. You are paid for waiting. And I'm like, you're right. He said, acting for you is the fun part. You are paid for waiting. And I'm like, you are absolutely right. So, yeah, the most challenging part is that part on set when you're not acting and you're waiting and waiting and waiting for hours. Wow. I love Pakistan, and I just love working in Pakistan. मैं सोच रही हूँ, हाय मैंने पहले क्यों नहीं किया. मैं बस मुझे एक यही रिग्रेट है कि मुझे बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था. कोई नहीं, अभी इतनी बहुत इतनी टाइम देर है. क्यों लगा दी. Inshallah, you have many, many more years. And your fans will Inshallah, I enjoy your hope so. हाँ, I बिल्कुल hope so. बिल्कुल. अच्छा, और कोई आपकी बेस्ट मोमेंट्स जो आपको याद हो ड्यूरिंग योर करियर? On set या off set? Like, sorry, on screen या off screen? Off screen, on screen, both. लेकिन let's talk about off screen. Okay, so the most fun I've had on set is on the sets of चुपके चुपके. चुपके चुपके पूरे एक साल में शूट हुआ था, अच्छा. because वो हो गया था, कोविड हो कोविड. गया था एंड लॉकडाउन हो गया था. हम्म. तो उसकी वजह से ना हम we all bonded. The whole cast became like a family because we went through this awful thing together. So we became very close, and उस सेट पे बहुत मजा आया था. It was a riot. हम हंस हंस के पागल हो गए थे, and we are all friends. And on screen, since you mentioned it, so now I'm asking you, okay, on screen, कोई moments? ऑन स्क्रीन तो आपके फेवरेट सीन्स होते हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल. मेरा फेवरेट सीन था फ्रॉम दिस ड्रामा आई रिसेंटली डिड कॉल्ड प्यारी मोना. उसमें I was playing a toxic mother, who's controlling toxic mother, who's always trying to tell her daughters what to do, and she has an image of her daughters in her mind कि जी बेटियों को ऐसा होना चाहिए, बेटियों को ऐसा होना चाहिए. और एक्सपेक्ट करिए कि जी उसकी बेटियां जो है वो वही करेंगी जो वो वैसे ही जिंदगी गुजारेंगी जैसे वो चाहती है. तो उस चक्कर में उसने अपनी बेटियों का क्या हशर किया, किस तरह से एलिनेट कर दिया. तो वो एक सीन था, लास्ट सीन, राइट? पूरा पूरा उस कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड था ना, कि वो माँ का जो कैरेक्टर था वो ऐसी क्यों है, वो एंड था ना, एंड का सीन था. तो एवरीथिंग वाज कमिंग टुगेदर. इट वाज गोइंग टू बी अ हैप्पी एंडिंग. So it was coming together, and this woman has, my character had realized her faults, her mistakes, and come to terms with them, and also looked inside herself, done some introspection to gauge why she is the way she is. So she had kind of confronted her own baggage uh, towards the end of the drama. एंड वो एक सीन था, और मैंने उसमें स्क्रिप्ट नहीं फॉलो किया था. वो लिटरली मैंने उस पूरे कैरेक्टर का जो निचोड़ है वो मैंने इम्प्रोवाइज किया था उसमें. दैट वाज नॉट स्क्रिप्टेड. जो मैंने बोला वो स्क्रिप्ट में नहीं था. Is there any advice that you want to give to people who want to go into acting or people who are interested in this field? अच्छा, मैं तो एक्चुअली एक यही बात कहूंगी कि इट लुक्स ग्लैमरस, बट इट्स वेरी 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 challenging. It's very
It's tough, it's challenging. So if you really want to be an actor, that is when you should definitely be one. If you want to be one, then though, if you have a dream, you have focus, you have direction, nothing can stop you. Then only you can stop yourself, because the entire universe will conspire to make it happen for you if you really want to do this. But if you're not that passionate about it and you're thinking, हाँ मैं जाके ना आज मैं टिकटॉक पे हूँ तो कल मैं हीरो बन जाऊं या हीरोइन बन जाऊं, don't do that. Then you're not being honest to yourself, you're not being honest to your craft. you know do whatever you're passionate about. That's great advice for everyone. What I want everyone to do is watch Dil Pe Dastak. That is Yes, coming up this Ramzan, and I think you're going to like it. absolutely. Thank you so much, Uzma, for sharing your experiences and your acting tips. And thank you for joining me. It was great talking with you. Allah Hafiz. Thank you for having me, Saadia. Thank you. Thank you.